gently. सभी को पुनः नमस्कार, सभी का स्वागत. I welcome you all to this general body meeting of the Indian Yoga Association. And by far I can say it is the largest general body meeting here. So आप सभी का स्वागत. Before we begin the official discussion, may I request our President, Ma Ansaji, to kindly bless and address our all the delegates. Well, since I can't see people from behind, I am standing, so it will be easy. So first of all, I am so glad that to see such lovely, beautiful faces in front of me, all smiling, all happy. I feel this effort which you all have made is very unique. This was a season which was a really difficult season in India because so many festivals were there. So all the aircrafts and all the traveling became very costly, and people still had to come in spite of all that. So I am really thankful to you all that you all people have made it. बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी मेहनत से आप सब आए हो, और हमें यही करना है कि हम साथ एकजुट होकर रहें और अपने इंडियन योगा एसोसिएशन को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दें कि दुनिया के कोई भी देश योग जब शब्द वापरे तो वो पहले इंडियन योगा एसोसिएशन की तरफ देखें कि उनका क्या स्टैंडर्ड है. We have to standardize yoga. As you all know, the way in which yoga is going on all over the world. और इसीलिए our effort. So all of you have to be with us together. All of us are together. आपके पास जो भी कुछ कहना हो, आइडिया हो, बहुत फ्रीली कह सकते हो. Please share your things very freely. You can see me. I am very relaxed person. I can take things as they are, very positively. I never misunderstand you. You can talk anything. So take me as your mother. That is first. I am mother as a first, then president of Indian Yoga Association. So maybe put it like that. So now I would rather request Subodhji to let's start with our procedures, then we will discuss. Fine. Pranam Ma, thank you so much for your guidance and blessings and such a positive support all the time, which will reflect in the report which we place here in front of all the members. ये इंडियन योग एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग है. नॉर्मली मीटिंग के बाद जो लोगों ने ये संभव बनाया उसको हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन मेरा विचार ऐसा है कि आई विल एक्नॉलेज दोज पीपल ऑफ the executive committee and the team before I start the presentation, because this has been possible because of them. So on the days, of course, with blessings of Ma, I start. We have Dr. Ishwar Baswareddy ji. He is our member of the Uttarakhand Council, and as all of us know, he is the person who was instrumental in getting the ideation of Indian Yoga Association. We have our revered Sridharan ji. He is the Vice President of the Indian Yoga Association. He represents a strong lineage of Shri Yogacharya ji. We have with us Shri K.C. Jain ji. He is our treasurer. He is also the managing trustee of the Anuvrat Trust, where we have our office. तो आप लोग कभी दिल्ली जाएं तो इंडियन योग एसोसिएशन के ऑफिस में जरूर जाएं. बड़ा सात्विक गुण से नर्वत है. So please visit. We have our dear Dr. Anand Babu. He is the joint secretary
And the credit for drafting this whole program of the symposium, the summit, goes to Dr. Rana. Besides it, we have Srimati Padmini Athod. She is the director of our working director of our PR and publicity working committee, and also a member of our executive committee. She has been doing a wonderful job of reaching out the message of Indian Yoga Association to large number of people. Dhanyavad. And we have our dear Dr. S.P. Mishra ji, one of the founding pillars of the Indian Yoga Association, the first Vice Chancellor of the place where you are sitting, Dev Sanskrit University. We have Dr. Ganesh Rao ji with us. He is the Director of the Standing Committee for Academics and Accreditation. They have done a wonderful job to discuss and publish more and more with the Indian Yoga Association. We have our own office team here. उनके बिना नहीं होता, ये meeting भी नहीं होती, summit भी नहीं होता. So we have Trushal Sulmania. He works in our office and has been there for many years and smiling and doing her job meticulously. We have Bhavna Puri. She is here. She handles all the state capitals. Bhavna is happy when everyone else is happy, so that is the good quality of Bhavna. I do not know if we have Deepthi girl here, but she works in our PRCB. She's right there. You have to do that Vakrasana kind of a thing. She is there with her child. Deepthi is in the PRCB because Mishra ji also is the CEO of our national accreditation body. And we have a recent person who served in army for 34 years. He is now the central coordinator of all the state chapters in Delhi. We have Colonel Atul Bhandari with us. And you will find him visiting all the states very soon. And how can I forget, ये जो भी program सब संभव हो रहा है, because we have Sri Suresh Bharwal ji with us. He is from the Sanskrit University. He has been our pillar of support. उनके बिना यहाँ कुछ संभव नहीं था. धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद. So I think I have covered all the office bearers. I have missed out. Gagan Sharma. Ravi ji. हाँ, रवि जी कहाँ? So we have once Gagan Sharma कहाँ है? वो भी present. हाँ, Gagan Sharma is also part of our PRCB. We have Ravi Chowdhury, our past joint secretary. He is here with us. Day before yesterday, he told me, Subodhji, I cannot make it. And yesterday I found him here. So I told him in modern terms, you have FOMO, fear of missing out. Subodhji, I need one more minute. Yeah. Sorry to disturb you. And as we all are present here, this is IYA ship, and the captain is Subodhji. Without the captain, the ship won't steer. So all thanks to you. Thank you. I'm so happy to have the guidance. So let's go to what we are here for. I will be presenting the. This is the agenda. Let's go to the third slide. Yes. So we have very clear agenda. Basically we will look at what has happened in last year. We will also look at the few statutory requirements and discuss the finances which have been there for the financial statement which is there for the last year. And lastly, we will have the awards for two of our eminent individuals at Yog Chikitsa Award. So we have confirmation of the minutes of the last meeting. There were the action taken on the minutes of the general body. First action to be taken was that there was a election come nomination of the executive committee in the last meeting which was held, and we
the new executive committee came into light after the general body meeting, which was held on February 19th, 2022 and February 7th, February 19th, 2022. To review the mailing list of the GBM, this was part of the discussion so that all the general body members would get the notifications. The annual report is what I am presenting to you. New executive committee under the leadership and guidance of Ma was formed, and it came into action on March 9th. Can we change the slide? Yeah, this is it. And here you see our whole team led by Ma. We have Swami Atma Priyanandaji, who is the senior vice president. You have Sridharan ji, you have Shri Chinmay Pandya ji, and other eminent individuals you can see. So this formed the executive committee. Aye, Bhagwati? Yeah. Please come. Yeah. Next. नई एग्जीक्यूटिव कमेटी जब आई तो हम लोगों का फोकस था वी इंक्रीज मेंबरशिप, हम लोग स्टेट चैप्टर्स को स्ट्रेंथन कर, हम IYA के सर्टिफिकेशंस को बढ़ाएं। हम लोग के एजेंडा में शुरुआत में ही ये था कि स्टैंडिंग कमिटीज जो थी हमारी वो थोड़ी सुषुप्ति में थी, तो उनको जागृत करने की कोशिश और प्रयास शुरुआत में से ही हम लोग कर रहे थे और उस विचारधारा पर फिर हम चलने लगे। एक आदेश हमारी प्रेसिडेंट का था कि सुबह कुछ भी हो जाए, वी शुड होल्ड वन मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी एवरी मंथ so that we ensure we are discussing in meeting, but that was not the only thing. फिर उन्होंने मुझसे अकेले में कहा कि ensure that at least 90% of the decisions which we take in the executive committee are completed by the next committee. तो इन्हीं गाइडेंस, इसी ब्लेसिंग से आगे जो काम संभव हुआ वो होता रहा। नेक्स्ट। So हम लोगों के कुछ डिसीजंस which were very helpful, जो यहाँ पर क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट से हैं, इसलिए आपको भी पुनः जानकारी होनी चाहिए। स्टेट चैप्टर का जो शेयर है वो हमने 70-30 रेशियो था। सो एवरी 100 रुपीज which was coming as membership, अगर वो जिस स्टेट का था वो हम लोग उसको 70% स्टेट को जाता था, 30% सेंटर पे रहता था। दिस वाज द वे द स्टेट विल फंक्शन। इसमें थोड़ा परिवर्तन ये किया कि जो स्टेट रजिस्ट्री या स्टेट के माध्यम से मेंबर बन रहा है, स्टेट विल गेट 70%, और जो सेंट्रल के माध्यम से मेंबर बन रहा है वहां सेंटर विल गेट 70% एंड स्टेट विल गेट 30%। सो दैट वाज द फर्स्ट डिसीजन व्हिच वी हैव टेकन, इट हैज वी हैव डन वेल ऑन दैट। पुनः फिर दोबारा हमारे अभी विल सी देयर वर 150 एसोसिएट सेंटर्स। हमने कहा कि एसोसिएट सेंटर सर्टिफिकेशन करवाएं। जैसे अभी काकाराम जी आए हुए हैं जयपुर से, बड़े विशाल व्यक्ति वहाँ राजस्थान, तो अब इन्होंने कहा कि सुबोध जी अब मैं लग जाऊंगा इस कार्य में, वी विल डू फ्रॉम आवर स्टूडियो एज मेनी एज पॉसिबल। सो वी सेड दैट वी शुड हैव ए some kind of recognition for the associate centers also. तो वहां पर हमने ये कार्य किया कि associate center for membership will get 40%, the state chapter will get 30%, and the center will get 30%. That was the decision which was taken. State chapters visit किए गए and they were reformed. So we have all the eminent people from states, but active हो गए काफी, because we have visited a lot of people. We have from Gujarat, Birju Maharaj ji here, and he has steered also. They also were awarded in the state conclave
as one of the most active states of the IYA. Eminent योगाचार्य हमारे साथ जोड़े हमने, और पहले डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी हमारे साथ पहले से थे, but we have a list in general body of the eminent yogacharyas. So we have Dr. M. Venkata Reddy, we have Sri Nataraj ji from Shivanand, Dilip Sarkar, Sadhvi Bhagwati ji and Durgadas Sawant. We kind of acknowledged and were proud to have them with us. Next. हमारे पास हमने जैसे कहा we needed to activate our committees. तो हमारी सबसे ज्यादा एक्टिव कमेटी है जो 30 दिन में 40 मीटिंग करती है, वो है डॉक्टर गणेश राव, रवि तिलपुरी, आनंद मालियोगी. ये है दी एकेडमिक एंड एक्रेडिटेशन कमेटी. मतलब इन लोगों को कुछ ना कुछ करना ही है, और वो बहुत ही अच्छा सिलसिला है. बिकॉज देन यू नो, इवन अगर हमारा भाव सेंटर में ऐसा हो कि थोड़े दिन रेस्ट करें तो रेस्ट नहीं करना. सो जी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में डालिए, ये परमिशन लाइए, वो कीजिए. सो वेरी एबली लेड बाय डॉक्टर राव एंड डॉक्टर आनंद एंड रवि. This is, so we developed the ethical code for yoga practitioner. उसमें श्रीधरन जी भी involved हैं and his whole team. ये तो नाम क्योंकि एकदम याद आ रहा है. But this document is approved and I think is on the website. It is on the website. So code of ethics for yoga practitioners. Because what we were finding is कि योग practitioner, योग teacher हैं, इन्हीं को कुछ पालन करना चाहिए यम नियम का. तो वो हमने यहाँ लिखा. ग्रैंड पेरेंटिंग प्रोग्राम फॉर योग थेरेपी, योग चिकित्सा रत्न, ये भी हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा. दिस वाज एन आइडिया कंसीव्ड. स्टैंडिंग रिसर्च कमेटी को हमने एक्टिवेट किया. दिस इज द आईसी अंडर डॉक्टर मंजुनाथ हु इज द डायरेक्टर. इनकी मीटिंग हो गई. दे फॉर्म द आईसी. दे आल्सो फॉर्म द आरएसी एडवाइजरी कमेटी. और हमारे जैन साहब जो ट्रेजरर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के व्यक्ति, तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है, सबसे पहले तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए किसी भी संस्था में. सो हमारे जो स्टेट चैप्टर्स हैं, कभी कभी हो जाता है इधर और उधर चले जाएं, तो इधर उधर नहीं जाए और सीधे ही रास्ते पर रहे. तो जैन साहब ने एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के रूल्स ड्राफ्ट किए विच वी सर्कुलेटेड टू ऑल द स्टेट्स. अब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिंसिपल थिंग्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि योग का एसोसिएशन है तो हमें स्वयं अनुशासन तो होना चाहिए. सो वी आर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी एंड वी आर प्राउड टू हैव सच मेंबर्स हु गाइड अस ऑन दिस. फिर हमने कहा कि अब इसमें हमको और आगे जाना है. IYA logo should appear in our member institutes website. It should appear in our associate centers website. तो मेंबर इंस्टीट्यूट्स में अभी 16 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हमारा अपीयर हो रहा है. 27 के पीछे हम पढ़ेंगे. तो अगले 1 महीने पद्मिनी जी का ये कार्य है कि अगले प्रेजेंटेशन में ये यस 27 + 16 हो जाए और बाकी वो रहे. एसोसिएट सेंटर भी 125 कुछ की वेबसाइट नहीं है, 44 की, बट दे आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली पुट द लोगो ऑफ द इंडियन योग एसोसिएशन. नेक्स्ट, स्टैंडिंग कमिटीज का कुछ तो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट, हाँ, ये है हमारी स्टैंडिंग कमिटीज. ऑल ऑफ यू शुड नो, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से आप स्टेट से आए हैं. If this is the model which you also follow, there is a standing finance committee, there is a standing academic and accreditation committee, standing research committee, standing legal and standards committee, standing publicity and publication and public relations. ये 5 कमेटियों द्वारा इंडियन योग एसोसिएशन. So it is basically a delegated democratic functioning. और इसमें हम जो डायरेक्टर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, we are activating them so that everything is strengthened. Next, हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज विद द NISD, द हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल एंड NIOS. हमने MOU कर लिए हैं. नाउ द लास्ट वन इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड वेरी सून, जहां पर हमारे जो एसोसिएट सेंटर्स हैं, they will also can become the centers for NIOS if they are want to offer yoga programs. Next, as part of the research activity, क्योंकि
इंडियन योग एसोसिएशन है, तो योग की फ्रेटर्निटी का क्या चल रहा है, कैसे. There was a beautiful research, survey research conducted by the team led by Dr. Ananda, which essentially gave us some of very important perspectives of the members of the Indian Yoga Association as far as their preferences of practice were concerned. So please, all of you should go through those preferences. कुछ सर्वे के रिजल्ट्स आश्चर्यजनक भी थे, तो वो डॉक्टर आनंद आपसे जरूर डिस्कस करना चाहेंगे कि हाउ वी परसीव योग, हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कैसा होना चाहिए और कैसा. नेक्स्ट, perception of yoga amongst IYA members. This was next. हम लोगों ने अभी तक काफी प्रयास हुए. Very good activities were held before the new executive came. हम लोगों ने लेकिन एक ऐसा मत था that we were always participating in events as IYA. वो हम कहते हैं ना पिगी राइड करना, कि कोई बड़ा इवेंट करना तो IYA को भी जोड़ दो. तो फिर हम लोगों ने इसी में सोचा कि IYA खुद ही इतना विशाल है कि we should be conducting our own programs and where people want to piggy ride everything. So that under the guidance and blessings of Ma was held, and we had our first state conclave in Anuvrat Bhavan on March 3, 2023. अभी इंडिया जिसमें विभिन्न राज्यों से, we had beautiful representation from the state chapter. We had Gurudev Shri Ravi Shankar ji, our chairman of the governing council. We had Dr. Nagendra ji, we had Bharat Bhushan ji, and we had Acharya Muni Kailash ji. So many people joined, which was a beautiful beginning. और दूसरा योग summit आज यहाँ पर उपस्थित है. Everyone is here. अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हम उदयपुर में जनवरी में फिर मिलेंगे, ऐसा डिस्कशन हुआ. और अगर चाहा तो 100 days to IDY 2024 the Indian Yoga Association will host in a very big way in Asana. तो ये हमारी प्लानिंग चल रही है और आप सभी लोगों का साथ तो हमारा विकास. The internet next. Yoga certification, this is just brief statistics. The Yoga certification list, we have the member institutions at 9 associate centers, 23 ये वो institutes ये accreditation करते हैं, certification वैसे लिख दिया गया. But हम लोगों को, so one request we have is जितने associate centers हैं, member institutions हैं, please start offering primarily the certification of the Indian Yoga Association. यहाँ मिश्रा जी बैठे हुए हैं, he is available here. Please discuss with him. आपके सर्टिफिकेट कोर्स होते होंगे, डिप्लोमा कोर्स होते होंगे, फाउंडेशन कोर्स होते होंगे. So Indian Yoga Association का जो सर्टिफिकेशन है, it is would be a privilege. जैसे माँ ने कहा शुरुआ कि people should look at Indian Yoga Association as a benchmark. This is what they are doing. So primarily, please start to offer this certification of the Indian Yoga Association, since it is very very economical for the students. हमारा सजेशन ये है, आप अपनी कोर्स फीस में उसको इंक्लूड कर दीजिए. Everyone gets certificate and it is jointly signed and with the emblem of the institute also. उसके बाद आप चाहें तो YCV का भी कर सकते हैं, which is an additional, it is a little expensive, but we also encourage YCV. हमने recognition of prior learning, this also we did. ऐसी संस्थाएं हैं, you must also be there, who have offered some courses past few years, and those members want to get recognized as IYA certified people. वो भी प्रावधान किया है. The research committee, we have formed the IEC, the ethical committee, which is chaired by Dr. V.N. Gangadhar, I think. Yes, it is chaired by him.
Then we have the committee which looks at publicity and all, and we have 300,000 visitors per month. 30,000? It's 300,000 directors. Right? Yeah, because the 300,000 per month. the comma is in the wrong place. Oh, so 300,000 people visit the website of IYA. A good job done. Congratulations. And so that is the part which we have taken ahead. And very soon you will have the yoga therapy certification also available, which the team is leading. The financial discipline has come because one thing आप सभी लोगों को समझना चाहिए कि जब इंडियन योग एसोसिएशन की बैलेंस शीट बनती है तो उसमें जितने स्टेट्स के अकाउंट हैं उसको लगाकर हमको ऑडिट करवाना पड़ता है. तो इट इज अ ह्यूमंगस टास्क which I should mention. Our accountant Mr. Bhupinder is doing an excellent job, so we should have a appreciation for him too. And we have Mr. Deepak who looks after the website and everything, so he is also doing a fantastic job. So who continuous statutory processes keep taking place, and we have also ensured that this has happened. Next please. State chapters are our strength. जो state के chapters हैं और they have been doing also very good activities. समय कम है, but I will say that there were Foundation Day celebration by Karnataka, Gujarat, AP and Tamil Nadu. We had the events with governors of the state which were organized by Jharkhand, Jammu Kashmir and Rajasthan. Pondicherry chapter organized workshops at various locations, and all the state chapter committees celebrated the International Day of Yoga. Next. This is our, so the number of, here is where we require your help. 2021 we had around 1600 yoga volunteer members till 2021. Today we have around 5600. We had yoga professional members at 2,200 in 2021. Today we have 5,886. We need more and more people. Life members we had 313. Today we have 568. Eminent yoga professionals 16. Associate centers has jumped. ये बहुत आवश्यक है. Centers को जोड़ना है इंडियन योग एसोसिएशन से. We should spread this message. जितने भी योग स्टूडियोज हैं, centers हैं, they should come under the umbrella of Indian Yoga Association. So there are presently we have associate centers 197, international associates 12. We are happy to acknowledge a delegation from Japan who's right there, Mr. Hiroshi Akata. We should give a round of applause. He has been very active in all the activities of the Indian Yoga Association, taking the certification even to Japan, but most importantly maintaining the vision of IYA कि जैसा योग को होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, उसी को आगे ले जाना है. 22-23 में स्टेट चैप्टर्स छोटा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मीटिंगों की श्रृंखला हमने बनाई है. अब ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो मीटिंग नहीं करते रेगुलरली उनका हमको भान है. तो ऑल अदर्स विच आर नॉट, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि गोवा स्टेट चैप्टर को हमको एक्टिवेट करना है, त्रिपुरा को हमको एक्टिवेट करना है, उत्तर प्रदेश. तो we are in know-how and this year is devoted to ensuring that the state chapters are activated. हम लोगों ने इवेंट कार्ड बनाया पूरे साल. आप सभी लोग स्टेट से आए हैं. कितनी एक्टिविटीज आपसे हम लोग अपेक्षा करते हैं? How many of the activities we are expecting from you? This is what we have requested and हम लोग चाहते हैं कि आप लोग उसको अमल करें उस पर. तुषार, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी हम लोग दूसरों को प्रवचन दें तो हमने खुद कितनी मीटिंग की. तो हमारी ये स्टैंडिंग कमिटीज की लिस्ट है.
रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंस कमेटी में ट्वाइस, मैंने आपसे कहा एकेडमिक एंड एक्रेडिटेशन मीटिंग में 14 टाइम्स, स्टैंडिंग रिसर्च कमेटी में 4 टाइम्स। अच्छा है कि लीगल कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं मिली। और पब्लिसिटी पब्लिकेशन ने कहा है 3 बार मिली है, लेकिन ये कम से कम 50 बार मिल चुके हैं ऐसे, क्योंकि ये ऑनलाइन लेते हैं। सो दिस इज वी हैव, हम लोगों ने ये निर्णय लिया एट सेंट्रल लेवल दैट वी शुड लीड बाय एग्जांपल। तो हम लोगों का जो प्रोसेस है वी स्ट्रेंथन, मेंबरशिप अवेलेबल है स्टेट वाइज, वो आप देख लीजिएगा। फॉर स्कैरसिटी ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग अहेड। IYA सर्टिफिकेशन का इंसिग्निया है ये, यू सी the various we are offering certificate course, foundation course and advanced certificate course. Please visit our website and look at it. हमारे 26 राज्यों में 8 स्टेट चैप्टर्स हैं, 26 states have, इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा states active हों, let us activate more and more, and it's a very good sign that all of you are here. आप लोग जैसे माने कहा, it was expensive, it was season, but still you all could make it, which was a very good thing to happen. And lastly, I would, before I go to the financial statement, the one statistic which I did mention, but I should. There was a slide about executive council, because I made a statement about the meeting of the executive committee. I will back it up. Since 21st, the formation of the 30th executive committee, till date we have had 14 meetings in a span of around 17 months. So that is something which I wanted to let everyone know. So now we'll go. This was the annual report. We will now just go to past, since ये जनरल बॉडी मीटिंग है, हमने सबको आमंत्रित किया है, but जितने भी 65 मेंबर्स हैं जनरल बॉडी के, Tushar has ensured that all of you were sent emails with the audited statement. Am I right, Tushar? Yes. Yes. आप में से मिला है आप लोगों को जो जनरल बॉडी मेंबर्स हैं? श्रीधर जी, you have seen your email with the financial statement. So हमारे ट्रेजरर साहब यहाँ हैं, केसी जैन जी बैठे हुए हैं. We have the audited statement. I will just read out the important part, and like Ma said, we are here for open discussion. किसी भी state chapter को anyone wants to have a query, समझना चाहते हैं, Jain साहब will be more than happy to make them understand. Okay? So संक्षिप्त में आपको मैं बताता हूँ. Total income from members' contribution for Indian Yoga Association was around, I am rounding off, 32 lakhs. Exactly, it was 31 lakhs 96,755 rupees and 82 paise. Grants and subsidies received were 1,26,000. We had a project from the Ministry of Social Justice. Students' fee receipt 23 lakhs. Interest earned was around 4.5 lakhs. Other income was 2.25 lakhs. And we should acknowledge and thank Gurudev Ravi Shankar ji. Not last year, but this year they have also contributed a sum of 10 lakhs as donation. We should also acknowledge Ma and the Yoga Institute for committing for the advertisement for the Yogavani, the magazine which we get. Thank you, Ma. So total income was 63,55,332 rupees and 92 paise. Now, the expenditure was 66,21,590. So we are under deficit of 2,66,000. Now, this is the position. We also have fixed deposits. This is an income and expenditure statement. लेकिन आप समझ रहे हैं कि we are trying to balance our income and expenditure. इसीलिए more associate centers come, more certifications happen, more members come in, the revenue part will be taken care of. But main उद्देश्य इंडियन योगा एसोसिएशन का प्रचार प्रसार and reaching the authentic
aspect of yoga, and we continue to maintain them. So with this presentation, may I request that we pass the annual financial audited statement. Please raise your hands so that we pass this by resolution of the general body. Say Om. And say Om. Oh. Dhanyavad. Thank you. And the last agenda is that we also need to appoint our auditors for the Indian Yoga Association for 23-24. We have our auditors, MS Prabhat, Jain and company. They are doing a fantastic job. बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. So I propose that we reappoint them as auditors for the year 2023-24. Please pass the resolution by reciting Om. So this is the presentation for the annual report, and before I go ahead with the honors, I will request any one of you has questions, but before that I will any question you have, please feel free to ask at this point of time. कोई भी संशय, कोई भी suggestion, anything you want to know more, please feel free. और अगर वो subjective है, if it is regarding each state या कुछ है, and one office bearer will help you, either the joint secretary or the director of PR, treasurer, then you are free to contact them here. Mishra ji is. I think we have heard all about the progress of IYA. One of the things which I feel like adding into it is the quality certification of IYA, through IYA. Because our personal certification body, which has been formed by IYA, is functioning very well from 2 points of view. One is that we are honest to ourselves, and whatever way we wish to conduct the quality certification exam, we are conducting in the same manner without compromising the quality. Unfortunately, it so happened that there are many quality certification body, PRCBs, and we don't want to compete with them. Their result goes beyond 100%. So we don't want to compete with them, and because of the quality, our result didn't exceed in any manner, more than 50 to 60% in some other cases, particularly in case of Japan. And I must say, since I was there with the whole team, their result was more than 95%, and it was very surprising to get the result of this kind from Japan. And in all the places, Osaka and the capital city of Japan, all the places, the result remained the same. Now, we are happy to also say that in Bahrain, we have been able to conduct the quality certification exam. And we are getting now requests, from some more countries. Unfortunately, the quality certification program, which we were anticipating from our own organizations and the state chapter, is not coming forth in the same manner. So my submission at this moment would be that please, be part of IYA by way of, helping us to promote quality certification program in two sense. That's the only request. And one more thing which Subodhji, made it, but he didn't make it very clear. I would like to say that EC has become very active, almost one meeting every month. And we are grateful to Ma giving time and conducting this meeting in continuation. That's all, Subodhji. Thank you. Pranam. Anyone else? सर मेरा नाम सिद्धि एरिया में दिल्ली से हूँ और मैं दो बातें कहना चाहता हूँ. पहला तो ये कि हमारे जो भारत के अंदर सरदार पटेल ने सारे भारत को एक किया था, इस तरीके से जितने भी योगा इंस्टीट्यूशंस हैं इनको एक किया जाए, इफ इट इज पॉसिबल. इनको एक बैनर के अंदर, एक बैनर है इतना बड़ा,
इंडियन योग एसोसिएशन। तो आपका मतलब है जो नहीं है उनको भी लाने का प्रयास लाने का प्रयास किया। नंबर 1, नंबर 2 जो रजिस्ट्रेशन है, मैं अभी जो यहाँ सबमिट के लिए आ रहा था तो मुझे कहा गया कि रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो मैंने कर दिया। हालांकि मैं पहले से रजिस्टर हूँ 2018 से, मेरा नंबर 94 है उसमें। तो वो जो पॉइंट है ये कहीं मिसिंग है कि भाई हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी एक बार कोई रजिस्टर्ड है तो उसे दोबारा रजिस्टर्ड ना हो जाए, तो इसको जरा चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप प्लीज उन्होंने जो कहा वो वापस लिख वो। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि एक चीज ये कि और संस्थाओं को हम IYA के फोल्ड में लाने का प्रयास करें जो नहीं आए हैं अभी तक। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इन्हें पहले रजिस्टर किया था लेकिन फिर से रजिस्टर करने की संभावना आई तो फिर से कर लिए, तो वेबसाइट पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि अगर पहले रजिस्टर्ड हो तो दोबारा रजिस्टर्ड ना हो। एक और चीज है कि रिसर्च के रिगार्डिंग अभी कल हमने यहाँ DSD ने अपना निकाला है कि यहाँ रिसर्च का एक जर्नल निकाल रहे हैं ये लोग। तो जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनके अंदर पूरा भारत का एक ही क्यों ना हो जाए, एक जर्नल हो हमारा जो पूरे इंटरनेशनल को लीड करे इंडिया की तरफ से। तो हमारे डॉक्टर आनंद से आप बात कर लीजिए। श्योर, थैंक यू। I represent a medical college graduates from Meghalaya. फ्रॉम आप चाहें तो यहाँ आ जाइए, तो यहाँ आपको माइक दे देंगे। Take this mic, please. My greetings from Meghalaya. My greetings to Meghalaya, from Meghalaya. I represent Negrims Medical College in Central Government Medical College. My question is there first question is there a chapter of IYA in Meghalaya? Second thing is now we have NMC has mandated a formalized curriculum in phase 1 in physiology. I am from physiology, professor in head, for 6 months. We also have to conduct yoga day, and we also are doing a lot of research. I personally have also represented in international level also, and PG curriculum में भी है. So is it not, my question is it not suitable that or it's not appropriate that we come under the ambit of IYA? I think that is a beautiful idea. So, two things you asked. One is Meghalaya does not have a state chapter. I'm not sure. I am sure. Okay. And so we will, since you are here, we will take you at least as a point of contact to see the possibility to start something in Meghalaya. Is that okay? Yeah. But just to tell you, that we also have NIA, a Northeast Institute of Ayurveda and Homeopathy in Shillong. Yeah. So that we are aware. But Indian Yoga Association state chapter will do a lot of good in that part. So we will be in touch with you. Padmini is here, she will be in touch with you and we will take it further. And of course we will work out what you said, that since you are representing a medical fraternity, they have introduced the necessity for having some foundation course and also IDY. We will definitely help to take it further. And since she is going to be in touch with you, we will take up this together. Thank you so much, and so nice of you to have come back all the way there. Thank you. IYA के अम्ब्रेला के नीचे भारतीय संस्थान क्या शामिल है? क्योंकि वहाँ पे बड़ी हेजिटेंसी है मेंबरशिप होने के लिए। भारतीय योग संस्थान आई थिंक इज पार्ट ऑफ IYA। ये हमारे कैसे ये कंफर्म they have not been active. वो हमारे कुछ मीटिंग्स में आते थे, बट आई थिंक वी विल टेक दिस अप। bachelor रेडी थी, अगर आपको स्मृति से याद हो। वहाँ की मेंबरशिप लेने में हेजिटेंसी है सर वहाँ के लोगों में। अच्छा, तो हम लोग उस पर कार्य करेंगे, उनसे मिलेंगे। उनके भारतीय योग संस्थान जी दिल्ली में है ना? जी दिल्ली में है मेन ऑफिस। मैं स्टेट ऑफ यूपी से मैं वहाँ का प्रभारी हूँ।
तो दिल्ली से हम आप उनसे मिल चुके हैं, हम जो आपके हेड है वहाँ जी देशराज जी है देशराज जी। तो हमारे मिश्रा जी जो हैं वो देशराज जी से मिलेंगे और ये संभावना जागृत करेंगे कि वो हेजिटेंसी शब्द निकल जाए जी हाँ, जी हाँ। और तो दिल खोल के जुड़े। मेंबरशिप जो है ना काफी अच्छी हो जाए सर। आपसे उनका नंबर वगैरह मैं दे दूंगा सर। आप दे दीजिएगा तो मैं उनसे मिलता हूँ जी तुरंत सोल्यूशन। मैं बालकृष्ण हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसे डाटा देख रहे थे तो उत्तर प्रदेश में काम बढ़ाने के लिए आप चर्चा कर रहे थे, तो आर्ट ऑफ लिविंग से हम अभी स्टेट का पूरा काम देख रहे हैं, तो हमें जरूर आप बताइएगा, वहाँ हम सहयोग करेंगे इसके लिए कि अपना काम बढ़े। आपका शुभ नाम? बालकृष्ण यादव। बालकृष्ण। ओके, थैंक यू। ओम, श्याम सुंदर तिवारी फ्रॉम दिल्ली। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जैसे अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है और योग का प्रचार प्रसार डाउन दी टू द लास्ट पर्सन ऑफ द कंट्री अगर वहाँ पहुँचाना है तो सबसे पहले योग की महत्वता बतानी पड़ेगी। अब प्रेजेंट डे समस्या ये है कि योग की कक्षा में योग करने बहुत कम आते हैं, जैसा कि बताया गया, वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए पहले आते हैं और जरूरत भी है। अगर हम उनके शारीरिक बीमारियों का शोधन नहीं कर सकते हैं तो मानसिक और आध्यात्मिक से छोड़ दीजिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने मेंबर्स हैं, अब हमें समस्या हो जाती है, जैसे हमें कोई मुंबई का पेशेंट मिल गया, हमें मालूम नहीं है वहां पर कितने लोग मेंबर हैं जो ट्रीटमेंट में भी महारत हासिल रखते हैं। तो अगर उनके मेंबर्स के साथ उनके डिटेल्स, मतलब किस एड्रेस पे रहते हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर और किस किस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग तो एज ए सेंटर चला रहे हैं, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो ऑलरेडी सर्विस कर रहा है, आई एम डूइंग एज ए सोशल एक्टिविटीज। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। दिल्ली। और एज ए योग टीचर हमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ने की जरूरत है, उस क्षेत्र में काम करने करेंगे और सभी का डिटेल्स अगर मिल जाए आपको, जो नया मेंबर है वो आपको हम दिल्ली चैप्टर में जोड़ लेंगे। ठीक, तो आप साथ में मिलकर सहना वो तू सहना बोला तू सहनी, ठीक है? थैंक यू। तो भावना कहाँ है? सर राजस्थान भावना में मेट्रो स्टेट चैप्टर इनका नाम दिल्ली में जोड़ दिया। यस मैडम, we have last 5 suggestions. बोलिए। ओम प्रणाम अध्यक्ष महोदय एवं सदन पूज्य गुरु जी। आदरणीय सर, ये एक विषय था अनुभव के आधार के ऊपर कि अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया और राजस्थान में भी इस बार काफी अच्छे कार्य हुए, जयपुर में भी पूज्य गुरु जी के सानिध्य में बहुत सारे कार्य हुए, वहाँ निगम भी जुड़ा और तमाम संस्थान जुड़े। एक प्रस्ताव, एक मीटिंग जब हुई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे, आदरणीय मसरा रेड्डी जी के मार्गदर्शन के अंदर वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हुआ, उसके बाद में एक प्रेरणा मिली वहाँ से कि जो काउंटडाउन सरकार ने किया था 50 दिन का, 100 डेज का, उसी प्रकार से जयपुर में निगम के साथ 21 दिन का एक काउंटडाउन का प्रोग्राम गुरुजी के निर्देशन के अंदर वहाँ कोऑर्डिनेट हुआ। उसमें प्रयोग किया कि वहाँ, क्योंकि योग की जब हम बात करते हैं तो ये स्पष्ट आता है कि योग सिर्फ चिकित्सा नहीं है, योग और उससे बहुत ऊपर की चीज है। तो और भी योग के जो आयाम है, भक्ति योग के ऊपर जो संस्थान कार्य कर रहे हैं और कई प्रकार के योग जो अपने जगह हैं, उनके संस्थान है वो भी कहीं ना कहीं जुड़े। तो एक बड़े कार्यक्रम वहाँ के लिए वहाँ पर जैसे कि इस्कॉन को भी जोड़ा, वहाँ के जो मंदिर थे उन सबको भी, ब्रह्मा कुमारी जी वहाँ पर जुड़ी, और वहाँ पर जो अक्षय पात्र हैं और स्वामीनारायण है उनको भी जोड़ा उनको, और तमाम लोगों ने मिलकर 21 दिन एक बड़े अलग अलग कार्यक्रम सब जगह पर हुए। और फिर उनका एक कॉमन प्रोग्राम और उनके जितने लोगों ने योगदान दिया, राज्यपाल साहब वहाँ पर आए, वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ। तो एक सभी को जोड़ने का एक जयपुर के अंदर बहुत बड़ा एक प्रयास हुआ। तो हमको लगता है कि जैसे कि यहाँ पर भी आए हैं, तो आने वाले समय में जितनी भी हमारी स्टेट लेवल पे यहाँ मीटिंग्स होती हैं, तो वो संस्थान जो भक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इन कार्यक्रमों से आई से जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है सब मिलकर एक बहुत सुंदर पॉइंट टेकन। तो अलाइड संस्थाएं भले मेंबर न हो, बस उनको जोड़ने का काम कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रणाम सर, मेरा एक सुझाव था। मैं राजस्थान चैप्टर से हूँ, एक्रीडिटेशन कमेटी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे स्वयं को अभी तक कोई खबर नहीं है कि मुझे एक्रीडिटेशन का कार्य किस तरह से राजस्थान चैप्टर में करना है। तो मेरा एक सुझाव था कि सेंट्रल
कमेटी से हम लोगों को जोड़ा जाए ताकि आपके पीछे जो बैठे हैं डॉक्टर गणेश राव जी उन्हीं से जुड़ जाओ बस। बिल्कुल। तो सर वो सेंट्रल कमेटी से हमको एक ग्रुप बनाया जाए ताकि स्टेट तक वो खबर हम तक पहुंचे कि हमें आगे कैसे गाइडेंस मिले इसके लिए। डॉक्टर राव से आप मेलानाम कर लीजिएगा, कतार में पीछे खड़े हुए हैं, नीली शर्ट में बेचारे लाइन में थे पहले नंबर। हरिओम, सबको प्रणाम और नमस्कार। मेरा नाम कल्लम प्रसाद है। आई कम फ्रॉम बैंगलोर। I have become an IVA member this year only. I come across knowing through S-class because in alumni membership I am in that group. They have sent me the details, then I have become a member. I don't know now in Karnataka chapter what are the activities happening, and few people have come already. I have met Mr. Krishna also. So in that angle, I wish state-wise people, so who are they have come here now, so what activities we can do it so that we can progress this one to make it a more efficient way. Yes. So what is happening, I also don't know exactly so many years highway was there in Karnataka. So sir, I will suggest there is Mr. Ravi Tilpuri here. Please stand up, Ravi. Please get in touch with him. He will get all the details of Karnataka. Okay. And I also wish that this summit should happen once in Bangalore also. Yes, very soon. Very soon. Whatever the need and helpful which is required, we actively participate once this group is done. So we take it as more initiation to do that. Thank you. नमस्ते ओम। मैं पल्लवी कवाने, डॉक्टर पल्लवी कवाने फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। मैम मुझे एक ऐसा क्वेश्चन है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम वर्कशॉप्स और कुछ योगासन के सर्टिफिकेट कोर्सेज लेते हैं, तब जैसे हम अब्रॉड जाते हैं तब योगा अलायंस सर्टिफिकेशन होता है और दे सेड दैट इज कंपल्सरी देयर। सो हमारा ये क्वेश्चन है कि इंडियन योगा एसोसिएशन का लोगो अगर हम सर्टिफिकेट पे अवेलेबल कर दे तो ये, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें हमेशा पूछते कि ये सर्टिफिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्रेडिटेशन उसको है या नहीं। तो ये जस्ट क्वेश्चन मुझे सब स्टूडेंट्स ने पूछा, तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट देम आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि ये सर्टिफिकेशन या हम जो कोर्सेज लेते हैं उन पे हम हमारे इंस्टीट्यूट से और हमारे इंडियन योगा एसोसिएशन का लोगो हम लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, इसीलिए जॉइंट इशू करते हैं, उसकी क्राइटेरिया है। यस। डॉक्टर एसपी मिश्रा जी यहाँ हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। आई थिंक वी विल टेक द लास्ट क्वेश्चन। यस। और मैं फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में लेक्चरर हूँ पूना में, तो फरवरी में हमारा इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस है, सो मैं सबको इनवाइट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, मैं मनीष हूँ, कोटा राजस्थान से योगा फ्रॉम हार्ट से। मेरा एक सजेशन है योग के प्रचार प्रसार में पब्लिसिटी के लिए। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हमने कोटा में योगा कैंप करा था। योग संस्थाएं तो सब जोड़ते हैं, लेकिन हमने शोषण संस्थाएं 55 शोषण संस्थाओं को इकट्ठा करके उनके मेंबर को लेकर कम से कम 1000 व्यक्तियों का एक साथ एक ही जगह योगा सेशन करा था। क्योंकि जो योग इंस्टीट्यूट हैं वो तो योग प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन शोषण संस्थाओं को जोड़कर जैसे 55 संस्थाएं जोड़ी थी, यदि आईवाई भी बहुत सारी संस्थाओं को, सोशल ग्रुप बहुत सारे हैं, उन सबको लेके एक सम्मेलन करा जाए तो उसका भी प्रचार प्रसार काफी अच्छा हो सकता है। और उसमें जो हमने सर्टिफिकेट दिए थे, इंडियन योगा एसोसिएशन का भी उसमें लोगो लेके एक सर्टिफिकेट दिया था और हमारी खुद की वेबसाइट में भी उसका प्रचार प्रसार करा था आईवाई के लोगों के साथ। धन्यवाद। आखिरी वक्ता हमारे जैन साहब जम्मू से। जो प्रोफेशनल मेंबर बनाते हैं उसके लिए कंडीशन रखी है कि 200 घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए, तो उसमें मेंबरशिप ड्राइव चलती नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, मेंबर बनाएं फिर बाद में ट्रेनिंग करवा दें, उसके लिए प्रोग्राम करेंगे। आप योग वॉलंटियर मेंबर बनाओ, मेंबरशिप की कैटेगरी हमने अलग-अलग। योग वॉलंटियर जो है वो 250 रुपए का है, तो वो तो बहुत लंबा काम हो जाता है ना। After doing the certificate, they can upgrade to 200 घंटे का पॉसिबल नहीं होता सर सर्टिफिकेट होना। चलिए आप मिश्रा जी से बात कीजिएगा, we will discuss. So we will move further now in the program.
हाँ, आप आ जाइए, आखिरी बाकी फिर लिख के ले लेंगे। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते मैम। कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से। हम लोग करीब 5 से 10 आए। सभी से जो मेरा सुझाव है, हम लोग जो बंगाल से आए अभी तो फिलहाल में आईवे के वॉलंटियर में जुड़े हैं, तो ऐसा कौन है आपके जाने में, तो बंगाल में कोई है तो आईवे के हेड ऑफ द है, तो उसमें हम जुड़ जाए तो काफी आईवे का काम का आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमको पता नहीं है भावना जी से मिलिएगा। We want to strengthen the IYA chapter. आपके मेरे सेल आपके साथ हैं? मेरे सेल, हाँ हाँ, और मेरी सेल दो लोग हैं। मेरी सेल। ओके। So please here. I don't know this. आप आगे उनसे आप एक बार मिल लीजिए। अच्छा। उनसे मिल लीजिए, वो वेस्ट बंगाल में काफी काम कर रहे हैं। अच्छा। और वो एक्टिव मेंबर है हमारी। वो चूंकि वेस्ट बंगाल की है, आप मिलेंगे तो सुविधा होगी। और आपको कोई दिक्कत हो तो उससे बात करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद। We have noted down your suggestions. We are last 10 minutes है हमारे पास। आप लोग, क्योंकि समय का अभाव है, but please if you still have suggestions, हमको email कर लीजिएगा या भावना और तुषार है उनको लिख कर दे दीजिएगा। Be assured we have written down everything which you have said, आप लोगों ने जो कहा है, और हम उस पर वो करेंगे। 2 मिनट हम आपसे बात करेंगे पर्सनली, समय का अभाव इसीलिए। धन्यवाद। We move forward with limited time we have। एक इच्छा जाहिर की थी हमारे जम्मू कश्मीर से लोग आए हुए हैं, जैन साहब, तो आप लोग आ जाइए। They wanted to just felicitate माँ as the president of the Indian Yoga Association। तो जैन साहब आपका स्वागत है। पासवान रेड्डी जी, आप 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट जल्दी करना। अशोक जी, सुनीता जी, सुधा जी, दर्शना जी, कुलदीप जी, अभिनंदन जी, रघु जी, राधना जी और राजीव। अभी आप 2 मिनट में वहाँ प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाकी फेलिसिटेशंस हम कल भी करेंगे आगे। थैंक यू। रेड्डी जी, आप भी आइए प्लीज। कल मैं नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अभी। आइए प्लीज, चलिए हो गया, आइए आप। कि हमारे सुबोध जी जो है कैप्टन है, उनको हम जब तक सेल्फ स्टेट नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चले। प्लीज इधर आइए, इधर माँ के साथ में आइए। धन्यवाद धन्यवाद जैन साहब और पूरी टीम। We so much appreciate the gesture from the state from Jammu and Kashmir. धन्यवाद। आप 2 मिनट रुक जाएंगे। अब हम भी just go to the next program। 2 शब्द बोलना चाहूंगा सुबोध जी के लिए। उस दिन प्रभु ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन आपने हाथों से मनाया होगा, पर उसने भी बहाए होंगे आंसू जिस दिन आपको यहाँ भेज के खुद को अकेला पाया होगा। We have said and we know, we have experienced
नींव बहुत जरूरी होती है। इमारत की नींव जितनी बुलंद हो उतना बुलंद वो इमारत होती है। तो डॉक्टर ईश्वर बासवा रेड्डी जी has been a stalwart in field of yoga therapy for decades, and he has been an ardent proponent of yoga therapy. हमारी executive committee had unanimously decided योग चिकित्सा रत्न अवार्ड जो दिया जाएगा उसमें डॉक्टर बासवा रेड्डी जी को सम्मानित करना चाहते हैं। Dr. Baswa Reddy has immensely contributed to the field of yoga and yoga chikitsa. ऐसे ही हमारे प्रेरणा सूत्र और इंडियन योग एसोसिएशन साथ जुड़े हुए यहाँ के हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड और भारत के दिग्गज डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। आपका भी हम सम्मान करना चाहते हैं योग चिकित्सा रत्न अवार्ड देकर। कृपया a big round of applause for Dr. Ishwar Bharadwaj. He is also the Dean Academics at this Sanskrit Vidyalaya. And before we move further for next, I will request Dr. Baswa Reddy ji to kindly share a few words and address our delegates who have come here. Dr. Baswa Reddy ji, kind. शांति शांति शांति। आदरणीय माँ, आवे के आदरणीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय श्रीधर जी, सुबोध जी, सेक्रेटरी जनरल आनंद जी, आदरणीय मिश्रा जी, ईश्वर जी, जैन साहब, गणेश राव जी, बहुत सारे दिग्गज लोग बैठे हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अक्टूबर 31 को मैंने लिखा था मेरा 15 साल on 31st of October I was established। 15 साल का जर्नी बड़ा होता है और पिछले 3-4 साल में आईवाई का स्टेट चैप्टर्स खुले हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहा है, एक्सपेक्टेशन हो रहा है, नंबर बढ़ रही है, इसकी मात्रा और भी बढ़ना चाहिए। मैं सीधा साधा बोलने के लिए प्रसिद्ध हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और बाहर भी रखते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन जैन साहब है, मिश्रा जी है, जो आज जनरल बॉडी मीटिंग हो रही है कि हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या क्या निर्णय लिया गया है, कॉपी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तभी ये जनरल बॉडी में पता चलता है। मैं सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, इसलिए आपको याद रखें, बुरा नहीं मानना है। इट इज अ प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स। मुझे ही मालूम नहीं है, गवर्निंग काउंसिल का मेंबर है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या क्या निर्णय लिया गया है। 2-4 लाइन में अभी अकाउंट मुझे मिला नहीं, cannot receive। मैंने आपको लिखा था मैं आ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। आज वो बोल रहे थे आपको मीटिंग, आज इंतजार कर रहे, मेरा नाम भी पता नहीं, आप बसव रेड्डी है क्या पूछ रहे। ये सभ्यता होती है। बहुत दुख के साथ आज बोलना पड़ा कि मुझे बुरा लगा, क्योंकि आज ये मुझे ही मालूम नहीं है कि
मेरा घर में मैं पढ़ाई हो गया, बुरा लगता है गणेश राव जी। कितना मीटिंग, 14 मीटिंग आपने क्या किया हमें मालूम नहीं। आई डोंट नो एनीथिंग। इज इट नॉट माई प्रिविलेज टू नो व्हाट यू आर डूइंग? मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन बता तो दे क्या 14 मीटिंग क्या किया। मेरा हक बनती है पूछने का। तभी आप लोगों को ये सारे इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि काम अच्छा नहीं हुआ, बेस्ट काम हुआ, मैं अप्रिशिएट करूँ, ये मैं बुरा मत मानी, मैं दिल से अप्रिशिएट कर रहा हूँ। पहले बोल दिया कि 3-4 साल में इतना प्रगति हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन योग रत्न किया, किसको दिया, क्यों दिया, आचार्य को दिया, हमें कुछ मालूम नहीं। आई डोंट नो एनीथिंग। अब आनंद जी और सूरज जी डिसाइड करते हैं, चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। ये इंफॉर्मेशन आने वाले दिन में आई हुई है। मैं सभ्यता अनुशासन हमने लोगो बनाया हर एक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाईवे से ज़्यादा लगाव है, क्योंकि 3 साल हमने क्या, मैं अकेला पहले क्या क्या कष्ट मुझे मालूम। मिश्रा साथ भी हमारे साथ आते थे सारे माजी के साथ। मैंने ये भी लिखा था कि जो फाउंडर मेंबर्स हैं 18 मेंबर हमने साइन किए थे, उनको भी याद किया जाए। आज अनंत भारती जी नहीं है, वेद भारती जी नहीं है, जयदेव जी नहीं है, और कृष्ण भट्ट भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे दिग्गजों को माजी है हमारे पास, लेकिन ऐसे लोगों को हमें याद करना चाहिए, क्योंकि पहली बार हमने सबमिट कर रहे हैं। ये बड़ा सबमिट है, मुझे बहुत खुशी के साथ आया हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ कर आया, क्योंकि सबमिट हो रहे हैं, हम सारे फैमिली मेंबर मिल रहे हैं। क्यों आईवाई का जो पुराना जो इतिहास है, हम इतिहास भूल गया 4 साल में, और हम आगे नहीं बढ़ सकते। और 4 साल के आपका भी इतिहास हो जाएगा, आपका भी कोई याद नहीं करेगा। योग परंपरा 4 साल में हम भूल जाते हैं कि हजारों साल का परंपरा कैसे चलती है। इसलिए आप लोगों का नया पीढ़ी है, हम पुराने जमाने के हैं। सो सभ्यता होना चाहिए। ये सभ्यता है तो आईवाई है। हमें इतने सारे लोगों को, गुरुजनों को मिलाने के लिए, सब लोगों पर अभी भारतीय योग संस्थान देसी राज्य को ही वाज द ऑनरेबल मेंबर था, क्यों मना करते हैं उसको? मैंने हाथ पकड़ पकड़ कर लाया। कोई भी परंपरा हमने छोड़ा नहीं। एक ही निरंजन जी ने, हम गए थे, ओनली ही सेड दैट हम उसके लिए आपके साथ नहीं आ सकते, लेकिन हमारा सहयोग है हमारी गवर्नमेंट के साथ। उसके अलावा सभी लोगों ने आया है कि वो परंपरा यहाँ याद करना चाहिए, नया चीज़ आगे बढ़े, मना नहीं करते, लेकिन ये सभ्यता होना चाहिए। और दूसरा, आजकल बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न है, ये तो हो गया, माफ कीजिए बुरा लगे तो, मैंने पहले बोल दिया, सत्य कड़वा होता है, मैं बोल कर चले जाता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आगे पालन कर लिया, तो दिल के अंदर में होता है ना, सम्मान के इससे पता नहीं, इससे कोई मार्क नहीं होता, लेकिन आपके दिल में हम है, हमारे दिल में आप सभी लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक प्रशस्ति से हम दिल में नहीं है कि, लेकिन आप प्रशस्ति दे रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता। योग इट इज फॉर द हार्ट, नॉट फॉर ब्रेन। इसलिए आप लोगों का नया पीढ़ी है, ये सभ्यता मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट आईवाई से, इतने महानुभाव मिलकर इसको खड़ा किया है। आप लोग भी आने वाले दिन में अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, पुराना जो है उनको आगे बढ़ाए। और ये मेरा अनुरोध है कि लास्ट में जो एक्रेडिटेशन की बात आती है, आजकल हमने YC में भी चालू किया, PRC भी यहाँ भी चालू किया। हम चाहते थे पहले से भी आईवाई ऐसे बॉडी बने कि उनका सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड टीचर्स है, उसकी मान्यता मिले। ये हमारा परिश्रम था, यहाँ नहीं हो पाया तो हमने YC भी चालू किया। इसलिए एक बार हम सारे मंथन करके, जो एक यहाँ मैं सबका प्रश्न ध्यान से सुना, यहाँ परिश्रम करके उसको क्या हल निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट है उसको वैलिडिटी हो जाती है। आपका 5 लाख का जो है, हमें 5,000 हो रहा है, 5 लाख हो जाएगा। इतना बड़ा परिवार है हमारा, इतना बड़ा 5 लाख हमारे लिए कुछ नहीं होता। हम सब लोग मिलकर काम किया तो अच्छे ढंग से करें, उसको ब्रांड बनाए,
तो इसलिए वो वाला हम चाहते हैं कि दूसरा बार जीसी में भी डिस्कस किए थे हम, जो रिकॉर्ड्स होते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो भी वो भी हम आईवाई की तरफ से योग का रिकॉर्ड जो भी होना है हमें लेना है। हमने बात किया अच्छा है, किसी कारण से हमने चूक गया होगा, लेकिन हमने एक बार हाथ में लेते तो करते हैं, इसलिए दो चीजें रिकॉर्ड करें, बाकी का तो जरूरत नहीं। सो एक तो है हमें हाउ वी कैन वैलिडेट और सर्टिफिकेट फॉर ग्लोबल सर्टिफिकेशन, आईवे का रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए हमें सब लोग मिलकर चर्चा करके सरकार तौर पर उसको क्या क्या करना चाहिए हमें करें। दूसरा है कि हम why we have to go for other book of records. Highway should become a body to go for all types of yoga records. ये दोनों मैं अनुरोध करता हूँ। तीसरा लास्ट है कि हमें समिट पहली बार समिट में मिले हैं और ये बाई एनुअल में बहुत मुश्किल हो जाती है। बाई एनुअल कम से कम 2 साल में एक ऐसा समिट मिले, पहले उन लोगों को सभी यूआईवाई के परिवार लोग आए, उनको दायित्व दे, उनको उपयोग करें सही ढंग से, क्योंकि साइंटिफिक बड़े हमने 10 साल तक एक MDNY में से लोगों को हर साल हमने योगा वीक के जरिए सारे लोग मिलते थे, एक अच्छा माहौल वहाँ। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने के बाद चेंज हो गया कि कम से कम यहाँ हर साल हो तो बढ़िया है। हमें एक रेजोल्यूशन करें, उसके लिए मेरे तरफ से तीनों काम के लिए तन मन धन, धन तो कम है अभी, तन मन जितना भी है मैं इसका, ये हमारा आईवाई हमारा परिवार है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेरा सेवा की जरूरत है मैं आपके साथ और बढ़ूंगा। आपने बसवरेड्डी जी का उद्गार सुना। होता यह है कि एक बच्चा, आपने एक बच्चे पैदा किया, इंडियन योगा एसोसिएशन पैदा किया, आपका बच्चा, अब वो बच्चा पढ़ने के लिए फॉरेन चला गया और वो खुद स्ट्रगल कर रहा है, फॉरेन में खुद स्ट्रगल कर रहा है इधर उधर, तो उसे ध्यान ही नहीं माँ बाप ने क्या किया, किसने क्या किया, ऐसा कुछ स्थिति अभी की है। अब वो बच्चा वहाँ थोड़ा सेटल हुआ है, तो अब वो बच्चा बराबर ध्यान देगा माँ बाप का और आपका। तो ये जो गलती हो गई उसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं सब मिलकर। होता यही है कि वो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लगता है कि कम्युनिकेट कर दिया है, मगर सामने वाले ने देखा कि नहीं, वो भी कंफर्म करना जरूरी है। और जब ऐसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, माँ बाप जिन्होंने शुरू की हर चीज, उनको तो 1 या 2 बार चेक करके भी पूछ लेना चाहिए, या अगर फोन करके भी बोल देना चाहिए, या कुछ करना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन हमें सुधारना है। सुबोध जी ध्यान रखिएगा, और आप सब यंगस्टर लोग, और अब आगे ऐसी गलती ना हो ये देखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े। Thank you, Dr. Basureddy, because Mahatma Gandhi ji ने सही कहा था कि the person who really cares for the organization will criticize in front of us so that we can improve, and that is the good part. We take it in that spirit of criticization is the how we can really work together in a proper manner. It's not criticization. Criticize नहीं करते। अगर उन्होंने तो मुझे कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, बच्चा ग्रो हो रहा है और वो तो जानते हैं, लेकिन गलती उनका काम ये है, पहले गलती बताना। ये बसवरेड्डी जी है। अक्सर हम पब्लिक स्पीकिंग में कहते हैं कि पहले क्या क्या अच्छा हुआ है वो बताओ और गलती बाद में बताओ, लेकिन बसवरेड्डी अलग है, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर रहे, वो सीधा सीधा सिखा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये सब कहा। क्रिटिसिज्म नहीं है उनका सजेशन है, और हम वो फॉलो करेंगे। Thank you. So we move towards the conclusion of this general body meeting. I am thankful. Any closing remarks will Mahan. So धन्यवाद. We will close this session with recitation of the Shanti Mantra. I thank all of you, सभी लोग जो अलग-अलग राज्यों से आए हैं, delegates who have made this successful and who have participated 100%. वो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि
everyone is participating in the workshops in the morning. We had lovely participation. So thank you once again. सभी को हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद. Kindly sit with your back upright, eyes gently.